Welcome again, sir. Thank you so much. Now I would request Dr. Sumit, sir, please introduce our speaker, Dr. Gaurav Dwivedi, sir. Good afternoon, everyone. It is my immense pleasure to introduce to you such an eminent researcher in front of us, Dr. Gaurav Dwivedi, sir. Sir is currently working as a scientist in ICMR Regional Medical Research Center, Gorakhpur, BRD Medical College campus. Sir has completed his PhD in the year 2013 from CSIR Center Institute of Medicinal and Aromatic Plant, Lucknow, and Dr. RML Awadh University, Faizabad. Sir has worked on the title Study on Efflux Pump for High Throughput Screening of Phytomolecules Combating Bacterial Multi-Drug Resistant Infections. Sir is currently working on the core concept of regional health issues prevalent in eastern part of Uttar Pradesh, such as prevalent infections, diseases, tribal health. Sir is associated with ICMR CSIR from the year 2004, and Sir has also worked as an assistant professor in BBA University and worked as a guest professor in Dr. MLK PG College, Balrampur, India. Sir has guided more than 3 PhD students and has more than 30 PG students worked dissertation under Sir. Sir has been honored with many awards. Some of them are Talent Search Awards by ICMR in 2017, Best Poster Award in 2015, Best Poster Award in 2014 also. Sir has also been received SERB Young Scientist Award in 2014, CSIR Senior Research Fellow Award in 2009. Sir has also graduated GATE in 2003 with 93.20 percentile. And Sir has a lot many publications, more than 45 publications in his name, creating an impact factor of greater than 285 and a citation of 1703 with an H index of 21, which is really appreciable. Sir has done more than 15 conferences, presented more than 20 papers, and 15 workshops have been attended by Sir. Sir is a reviewer of many journals like Biotechnology Advances, Scientific Reports, Journal of Antimicrobial Chemotherapy, Coles 1, Bioorganic Chemistry, and many, many more journals. Sir is a reviewer. Over to that, Sir is also a extracurricular activity of poem writing, and Sir is participate in multiple games. We have such an eminent researcher in front of us. I welcome you, sir, for this session. Hand over to you, sir, for the session. Thank you. यही है ना Namaskar. So very good afternoon to all of you. I am very thankful to HITAYU team for inviting me as a for my topic, that is role of Ayurveda medicinal plant to boost immunity, learning from the pandemic. But my work should be concentrated on the resistance reversal potential of the medicinal plant. Next, please. Actually, I am in my second home. So Guru Gorakhnath University, MAHAYOGI Gorakhnath University is my second home. So I used to come here for many purposes. So I would like to start with saying of Gandhi ji, health, that is real wealth, not the pieces of gold and silver. So I would like to start with your words, na koyam kame, rajyam na swargam, na punarbhavam, kame dukh taptanam, praninam, martinasanam. It means I don't wish for a kingdom,
I don't want heaven and salvation. It's my wish to be able to help in elevating the suffering of peoples. तो जो आपका एम है वही हमारा एम भी है. जैसे हमारे इसमें क्या कहेगा, परीक्षा करीनो ही कुशला भवंती. इसका मतलब जब तक हम परीक्षण नहीं करते हैं, इसका मतलब जब तक हम डायग्नोसिस नहीं करते हैं, तब तक केवल सिम्टम्स के बेसिस पर केवल 40% और 50% ही बता सकते हैं. तो कुशल हम लोग कब होंगे? व्हेन वी स्टार्ट टू इन्वेस्टिगेट द थिंग. So in the field of observation, because he is the father of microbiology, Louis Pasteur said, in the field of observation, chances favor only the prepared mind. यानी अगर हमें रिसर्च करना है तो अनप्रिपेयर्ड माइंड से नहीं करना है. अगर हमें रिसर्च की तरफ बढ़ना है तो फिर हमें क्या करना होगा? वी हैव टू वर्क एज प्रिपेयर्ड माइंड. So we were the part of the research cell of गोरखपुर. जैसे कि बोला गया था कि गठित हो रिसर्च डेवलपमेंट सेल्स. ये जितने भी हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी हमारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी हमारे साइंस के फील्ड में काम करने वाले इंस्टीट्यूट है, सभी का एक साथ में जो है पूरा मीटिंग हुआ था इन द प्रेजेंस ऑफ साइंटिफिक एडवाइजर प्रोफेसर डीपी सिंह. उनके प्रेजेंस में ये चीज हुआ था. तो हमारी पूरी टीम है, ये अगर हम बात करें तो ये पूरी हमारी टीम है. और साथ में वी ऑलरेडी साइंड द एमओयू विद गुरु गोरखनाथ यूनिवर्सिटी. और तब हमारे लिए क्या मेन फोकस था कि वायरल वाली बीमारियों के शोध और निदान खोजेंगी दोनों संस्थाएं. तो अभी हम ये बात करें तो दोनों इंस्टीट्यूट का. अच्छा अच्छा जी, ठीक ठीक है. So I would like to introduce about what is ICMR, Indian Council of Medical Research. So this one is the one of the oldest biomedical research organization. It was established in 1911. Okay, more than 100 years. And initial name was the IRFA, Indian Research Fund Association. In 1949, it becomes the ICMR. So ICMR is the oldest biomedical research organization, while its baby Regional Medical Research Center Gorakhpur was RMRC was established in 2018. So we are the youngest baby of ICMR. In the same way, in 2017, it was established as ICMR Gorakhpur, while the Guru Gorakhnath University, MAHAYOGI Gorakhnath University was established in 21. So हम लोग क्या है कि हम लोग बचपन के साथी हैं. ठीक है, हम लोगों में क्या है कि बस साथ साथ जो है आगे बढ़ रहे हैं. लेकिन अगर हम बात करें इन द फील्ड ऑफ द रिसर्च, तो कहते हैं ना कि देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर. तो अब हम कैसे कह सकते हैं कि ICMR इज RMRC कैसे नंबर 1 है? कैसे नंबर 1 है? वी वर द पायनियर टू आइडेंटिफाई द मेन कार्डिएटिव एजेंट्स ऑफ AES. सो सबसे पहले हम लोगों ने बताया कि AES का मेजर कार्डिएटिव एजेंट कौन सा है. एंड वी वर द पायनियर टू इंट्रोड्यूस COVID-19
testing COVID-19 diagnosis in Eastern Uttar Pradesh. So we were the first lab to start the COVID-19 diagnosis in Uttar Pradesh. Until date, we have completed more than 10 lakh tests for the COVID-19. So we not only done only the COVID-19 diagnosis, हमने इसके साथ में क्या काम किए हैं? We were the part of the National Sero Survey. So on the basis of the National Sero Survey, Government of India started to decide the plan how what is the impact of the COVID, and different policies were made on the basis of the Sero Survey. So we were also the pioneer in working on the vaccine interchangeability in Siddharthnagar district. So what was happened? The first dose was given as Covishield, while the second dose was given as the Covaxin. So the government of Uttar Pradesh asked to ICMR kindly complete two types of studies. First, what is the immunopotency of that particular vaccines, heterogeneous vaccine, and safety profile of the vaccinated people. So we completed this study, and this study was for the first time in Southeast Asia, and we published these work in more than 39 impact factor for the vaccine interchangeability studies. So we are able to perform all these things with the help of, because we are the state level viral research diagnostic laboratory. We have the mobile BSL-3 laboratory. It means we have the mobile BSL-3 in Asia. We have only two buses, one in NIB Pune and second bus is RMRC Gorakhpur. And we have the high throughput COVID-19 lab. We have the GGIMS Apex laboratory. We have the dengue sentinel site, as well as we have many sophisticated instruments such as NGS, next generation sequencer, flow cytometer, automated microbial system, as well as the ultracentrifuge. So with the help of these instruments, we are able to perform the experiments very smoothly. So I would like to start with science. So whenever the science advances, it always translates in the form of the medicine. Okay? And the best example of the medicine was the antibiotics. And antibiotics was introduced like a Superman in 1940s. So I would like to start with the viruses. अब आप लोग कहोगे कि आपने सर तो बता दिया कि आप antibiotics was the best discovery of the translational medicine, लेकिन आप start क्यों कर रहे हो viruses के द्वारा? Because the maximum pandemic is caused by the viruses. That's why we have to understand what are the major mechanisms that is responsible to make viruses more frequent when compared to the bacteria. तो अगर हम बात करें वायरसेज की, तो वायरसेज में क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन. अगर हम बात करें जीनोम होता है, कैप्सिड होता है, और फिर इसके साथ में इसका कवरिंग की अगर हम बात करें तो एनवेलप प्रोटीन्स होती है. तो जितने भी ह्यूमन वायरसेज होते हैं, ऑल द ह्यूमन वायरसेज हैज द ग्लाइकोप्रोटीन एंड एनवेलप प्रोटीन्स. तो इसके लिए इसका मतलब क्या हुआ? उनके पास तीन ही मेजर कंपोनेंट, जीनोम, न्यूक्लिक एसिड, आइदर डीएनए और आरएनए, सेकंड कैप्सिड, एंड थर्ड वन इज द कोट. अब इसी के बेसिस पर, बिकॉज दे डोंट हैव मशीनरी फॉर द रेप्लिकेशन, इसीलिए इनको क्या बोला गया? दे आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग वायरसेज का. इसका मतलब क्या हुआ कि ये टोटली क्या होगा? आपके पास आएंगे और आपके ही
होस्ट सिस्टम को, मशीनरी को पूरा हाईजेक करेंगे, देन दे विल स्टार्ट टू मल्टीप्लाई। अब अगर वायरल डिसीजेज की बात करें तो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द वायरल डिसीजेज? तो वायरल डिसीजेज के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बिकॉज दे आर टारगेटिंग योर ओन इम्यून सिस्टम, उसी को दे आर बाईपास योर इम्यून सिस्टम। अब उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? द मैक्सिमम ड्रग्स आर टारगेटिंग आवर ह्यूमन सेल्स एंड दीज आर द इंट्रासेलुलर पैथोजेंस and they are inside our cells. So each and every antiviral should cross first the human cells, then they come towards the virus. अब अगर हम बात करें कि वायरल डिसीज का ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या चीजें हैं, तो ट्रीटमेंट के लिए वी हैव द एंटीवायरल ड्रग्स। यस, वी हैव द एंटीवायरल ड्रग्स बट फॉर ओनली few viruses like herpes viruses, like influenza and like retroviruses। इसके अलावा जितने भी वायरसेज हैं उनके लिए हमारे पास वी डोंट हैव एनी एंटीवायरल्स। और जब हमारे पास वी डोंट हैव द वैक्सीन एंड वी डोंट हैव द मेडिसिन, अगर हमारे पास ये दोनों चीजें नहीं होते हैं तब हमारा जो इंटरवेंशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनपीई, नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन। तो जो नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन, उसमें क्या होता है कि हम लोग प्रिकॉशनरी जितनी भी चीजें रहती वी हैव टू फॉलो, लाइक इन द कोविड, व्हेन द कोविड-19 पैंडेमिक केम, तो मैक्सिमम केसेज में क्या था कि वी डोंट हैव द फोन उधर ही रख लूंगा। Okay, when the COVID pandemic came here, we don't have any vaccine, we don't have any medicine for the COVID-19। ये दोनों नहीं थे हमारे पास। तब फिर हमने क्या चीज किया जिसको बोलते हैं नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन, लाइक सोशल गैदरिंग, washing our hands, social distancing, whatever the practices are present, we have to follow. लेकिन if we have the medicine and we have the vaccines, तब उसको बोलते हैं pharmaceutical intervention. So for the herpes, for the influenza and for the retroviruses, we have the medicine, so we have to follow the pharmaceutical intervention. अब अगर बात करें कि एंटीवायरल ड्रग्स की, तो एंटीवायरल ड्रग्स की अगर हम बात करें, देयर आर टू कैटेगरी ऑफ एंटीवायरल्स, फर्स्ट एंटी रेट्रोवायरल एंड सेकंड वन इज द नॉन एंटी रेट्रोवायरल। सो जो एंटी रेट्रोवायरल अगर हम बात करें, देयर आर ओनली फ्यू ड्रग टारगेट्स लाइक न्यूक्लियोसाइड रिवर्टेज, ट्रांसक्रिप्टेज, nucleotide revertase, transcriptase, only 2 or 3 drug targets are present in the antiretroviral drugs, while in the case of the non-antiretroviral we have the nucleoside analog, we have the pyrimidines, we have interferon. So these are the different antiviral drugs that are present in the field of the virus disease control. So these are the different viruses like herpes virus, cytomegalovirus, retroviruses, SCV, influenza, and these are the different antiviral drugs and these are their drug targets. So what is the problem with the antiviral drugs? The first problem is the like these are the herpes viruses. So what is the problem with the anti-herpes viral drugs? They start to show the resistance against the available drug. Like acyclovir is the common drug that is used for the treatment of the herpes viruses.
So in viruses, the drug resistance also become a major problem for the available antiviral drugs. In the case of the influenza virus, the mutation rate is quite high, first one, and second, we have very limited number of the drugs, and the available drugs start to show the resistance towards the viruses. In the case of also the retroviruses, available antivirals start to show the resistance. So these are the major problem, like in the case of the viruses, because we have only 105 drugs till date. अगर बात करें वायरसेज के लिए, तो वायरसेज के लाखों जो है ट्रायल्स होते हैं, लेकिन अगर एफडीए अप्रूव ड्रग्स की बात करें तो 1964 से अगर हम बात करें, 1960s में सबसे पहले एंटीवायरल ड्रग्स आई थी, उसके बाद से अब तक केवल 105 ड्रग्स ही अप्रूव्ड हुई हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास बहुत कम ही हमारे पास हथियार है एंटीवायरल्स के लिए। तब फिर हमें क्या करना चाहिए? इसका मतलब क्या करना है कि हमको नई एंटीवायरल ड्रग्स को सर्च करना है, एज वेल एज द ड्रग टारगेट्स। और अगर ना ड्रग्स रहेगा ना ड्रग टारगेट्स रहेगा, तो देयर इज लेस चांसेस ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द ड्रग्स। इन द सेम केस, अच्छा ड्रग की डिफिनेशन कौन बताएगा? What is the definition of drug? कोई एक which have the potential to subside the conditions of the disease or the symptoms. Okay. So according to you, the drugs are the molecules or compound which are responsible to treat the diseases. Okay. Any substance which is used to diagnosis, treatment, and prevention is known as drug. Okay. So according to WHO, any molecules which bring changes inside the biological system, that is known as the drug. तो ड्रग की सबसे बड़ी खूबी क्या है? जब भी किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर आएगा, इट विल ब्रिंग्स द चेंजेस। लेकिन उसके लिए दो मेजर कैटेगरी रखी गई, फर्स्ट वन एफिकेसी एंड सेकंड वन इज द सेफ्टी। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द एंटीवायरल ड्रग्स? क्या है कि दे हैज द पोटेंशियल, इन द सिमिलर वे दे आल्सो हैव द टॉक्सिसिटी। दैट्स व्हाई द मैक्सिमम ड्रग्स आर नॉट classed for the in the category of the antivirals. अब इसके बाद में अगर हम बात करें फंजाई की बात करें, फंगल्स की बात करें, the similar problem with the fungi also, because we have very limited number of the drug targets. अब अगर हम बात करें सेल वॉल, we have the cell membrane, we have the mitochondria, we have the nucleus. लेकिन अगर हम मैक्सिमम ड्रग्स की बात करें तो दे बिलोंग्स टू द मेम्ब्रेन इनहिबिटर्स। तो उसमें से मैक्सिमम क्या है? मेम्ब्रेन इनहिबिटर्स, बिकॉज द मेम्ब्रेन ऑफ द फंजाई इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द ह्यूमन वन। तो ड्रग डिस्कवरी के लिए सबसे पहला जो है होता है कि द टारगेट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द होस्ट सेल। ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम बात करें, again the problem of the drug resistance occurred in the fungi also, and there are many mechanisms responsible for the drug resistance in the fungi, but the major problem of the drug resistance found in the bacterial system. Like the first antibiotic, that was the penicillin, which was discovered in 1930, that belongs to the group beta lactams. In after few years,
aminoglycosides were also introduced. So these are the different group of antibiotics. In the similar way, they also emerge the resistance. Bacteria start to emerge the resistance towards the available antibacterial drugs. So from 1930 to till date, only few group of antibiotics were discovered, and bacteria acquired the resistance towards these available antibiotics. So what are the different ड्रग टारगेट्स फॉर द बैक्टीरियल सिस्टम? तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेल वॉल बायोसिंथेसिस, तो सेल वॉल, क्या ह्यूमन में सेल वॉल होता है? नहीं होता ना। तो इसका मतलब ऐसी ड्रग कुछ टारगेट द सेल वॉल दैट शुड बी द नोबल ड्रग, क्योंकि वो टारगेट हमारे ह्यूमन में नहीं पाया जाता, तो देयर इज लेस चांसेस ऑफ एनी टॉक्सिसिटी। तो सब इसीलिए सबसे ज्यादा अगर हम ड्रग्स की बात करें तो हमारे क्या है, सेल वॉल बायोसिंथेसिस को करती है। सेकंड वन इज द फोलेट बायोसिंथेसिस, सल्फा ड्रग्स। फिर इसके साथ में दूसरी जो सबसे ज्यादा ड्रग्स यूज होती है दैट बिलोंग्स टू द प्रोटीन बायोसिंथेसिस। तो जो प्रोटीन बायोसिंथेसिस होती है उसके लिए देयर आर टू मेजर यूनिट्स, 30S एंड 50S राइबोसोमल यूनिट्स। उसके लिए जो है अगर हम बात करें तो मैक्रोलाइड्स, क्लोरेम्फेनिकॉल and different group of antibiotics are used in the field of 50S subunits, while in the case of the 30S subunits, maximum aminoglycosides and tetracyclines are used. अब इसके बाद में अगर हम बात करें, there are nucleic acid synthesis inhibitor. आप लोग जैसे इस समय सबसे ज्यादा जो है, अभी जल्दी में किसी ने एंटीबायोटिक्स यूज किया है? अभी किसी ट्रीटमेंट के लिए आप लोग गए थे डॉक्टर के पास? तो अगर गए हैं तो सबसे पहले कौन सी एंटीबायोटिक्स आपको दी गई? अगर हम बात करें तो सेल वॉल इनहिबिटर, उसी में सिफेलोस्पोरिन्स भी आ जाते हैं। तो सिफेलोस्पोरिन्स के डिफरेंट जनरेशन है, व्हाइल इन द केस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, तो अगर हम बात करें डीएनए गायरेज, तो फ्लोरोक्विनोलोन्स और जितने भी उनके साथ में हैं, तो चाहे सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो, ओफ्लॉक्सासिन हो, लिवोफ्लॉक्सासिन हो, ये सभी आपके क्या हो गए, न्यूक्लिक एसिड बायोसिंथेसिस इनहिबिटर हो गए। तो अगर हम बात करें जितनी भी हमारी एंटीबायोटिक्स हैं, दे आर टारगेटिंग सेल वॉल बायोसिंथेसिस, प्रोटीन बायोसिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस, डीएनए न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, एज वेल एज सेल मेम्ब्रेन एंड फोलेट बायोसिंथेसिस। अगर हम इसकी बात करें तब भी हमारे पास क्या, वी हैव द लिमिटेड ड्रग टारगेट्स। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास टारगेट तो एक कुछ ही है। तो एंटीबायोटिक्स भी हमारी क्या होंगी, दे बिलोंग्स टू सम ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो दिस इज द ओवरऑल हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। सो इन 1943 द पेनिसिलिन वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द क्लिनिकल यूज। और अगर हम बात करें और 1946 में स्ट्रेप्टोमाइसिन वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड। लेकिन उसी के जस्ट बाद में अगर हम बात करें रेजिस्टेंस कैसे आना स्टार्ट हो गया, इन द सेम टाइम तभी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बोला था कि इवन वी डिस्कवर्ड अ नोबेल ड्रग्स बट देयर इज पॉसिबिलिटी दैट दीज ड्रग्स बिकम द यूजलेस आफ्टर सम टाइम। और उसके बाद में अगर देखें 1950 to 70, इसको बोलते हैं गोल्डन एज ऑफ एंटीबायोटिक्स। मैक्सिमम ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स वर डिस्कवर्ड बिटवीन द 50s एंड 70s। और अगर हम जल्दी की बात करें अप टू 80s तक मैक्सिमम एंटीबायोटिक डिस्कवर की गई थी। लेकिन अब अगर बात करें इसके बाद, वी डोंट हैव एनी न्यू क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ, in the absence of any new class of antibiotics, we are not able to fight any bacterial infection. अब अगर आप बात करोगे, आपने कहा कि पैंडेमिक से हमको लेसन लेना है, तो पैंडेमिक में मैक्सिमम लोगों की जो डेथ हुई थी निमोनिया से हुई थी। अब आप कहोगे निमोनिया से हुई थी तो उसमें एंटीवायरल तो है नहीं, एंटीवायरल ड्रग्स दे तो वायरसेस क्या करते हैं, वायरसेस दे वीक आवर इम्यून सिस्टम और हमारे होस्ट सिस्टम को इतना डैमेज कर देते हैं कि क्या प्रॉब्लम होती है, द सेकेंडरी इन्फेक्शन स्टार्ट टू ग्रो।
और जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है वो और खतरनाक होता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि कोविड के केसेज में मैक्सिमम जो डेथ हुई वो निमोनिया से हुई, दैट वाज द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। अब इसमें यही चीज आया कि अल्टीमेटली हमको फाइट किससे करना है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से करना है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए वी हैव द एंटीबायोटिक्स, लेकिन नाउअडे वी आर हैविंग द बैक्टीरिया दैट they do not able to treat any infection. हमारे पास इतनी ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स है बट वी आर नॉट एबल टू ट्रीट एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसीलिए ऐसे बैक्टीरिया को हम लोगों ने क्या बोला, सुपरबग्स बोला। तो व्हाट आर द मेजर मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस? फर्स्ट is the modification and degradation. Like any antibiotics that become the inactivated by the different enzymes, and they will also modify the antibiotics, and due to this reason the antibiotics do not work. While in the case of the amplification and modification, there is changes in the bacterial targets, and the bacterial target are changes due to the amplification and modification of the targets. That's why the antibiotic do not bind to the altered targets. While in the case of the third one, that is the restricted entry of the antibiotics, कि एंटीबायोटिक्स उसके अंदर इतना कम जा रही है कि आपका that is not the appropriate dose to treat that bacterial infection. तो उसके लिए what are the major mechanisms responsible for? That is the less permeability, and second one is the overexpression of the efflux forms. So these are the major mechanisms of resistance acquired by the bacteria. So WHO started to say we are running shortage of the antibiotics. We don't have good antibiotics to treat the available बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो उसके बेसिस पर उसने WHO ने एक कैटेगरी बनाई बैक्टीरिया की जिसको बोला गया डर्टी डच, यानी 12 ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सबसे खतरनाक है। तो उसने सबसे पहला बताया क्रिटिकल। तो क्रिटिकल के लिए बोला गया कि वी नीड द न्यू एंटीबायोटिक्स एट द very high priority level. So first one is the Acinetobacter baumannii, second one is the Pseudomonas aeruginosa, and third category is the Enterobacteriaceae. While the other cases are the high priority bacteria, and third one is the medium priority of the bacteria. So our antibiotics are becoming useless. तो अभी हमने आप लोगों से बोला था कि हमारी जो एंटीबायोटिक इंट्रोड्यूस हुई थी वो किस फॉर्म में इंट्रोड्यूस हुई थी, लाइक ए सुपरमैन। लेकिन आज हमारी एंटीबायोटिक की कंडीशंस क्या है, ये बंदा क्या बोल रहा है, नो वन टच माय सेक्रेट काउ। अब क्या बोल रहा है, जब पूरी एंटीबायोटिक को इसने बर्बाद कर दिया तो बर्बाद करने के बाद में बोल रहा है कि नहीं, अब हमारी इस एंटीबायोटिक को किसी को नहीं छूना है। अब अगर हम लोग बात करें कि व्हाट आर द प्रॉब्लम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू ड्रग्स, क्या क्या मेजर प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट टाइमलाइन। तो इन 15 इयर्स वी आर एबल टू गेट ए न्यू ड्रग। अगर 15 साल हम इन्वेस्ट करेंगे तब हमको जाकर के एक नई ड्रग्स मिलेगी। और सबसे पहले अगर ड्रग डिस्कवरी की बात करें तो ड्रग डिस्कवरी में वी आर स्टार्टिंग विद 10,000 कंपाउंड्स, और 10,000 कंपाउंड्स में से जब हम प्री क्लिनिकल स्टेज में जाते हैं तो वी आर एबल टू गेट ओनली 250 एक्टिव कंपाउंड्स। आफ्टर दैट अगर हम क्लिनिकल ट्रायल्स में जाते हैं तो 10,000 से हमने अपना करियर स्टार्ट किया था, और जब हम क्लिनिकल ट्रायल्स में आए वी आर एबल टू गेट 5 एक्टिव कंपाउंड्स। तो यानी हमने 10,000 से अगर स्टार्ट किया तो कितना आया, 5 कंपाउंड्स आया। और एफडीए अप्रूवल्स में जाकर के केवल एक ड्रग ही हमारे एफडीए अप्रूव हो सकती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुआ कि ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट रिक्वायर्स मेनी फेजेस। सेकंड क्या है, हमारे लिए इसके लिए डिफरेंट टाइमलाइंस चाहिए।
और अगर हम क्लिनिकल ट्रायल्स की इटसेल्फ बात करें, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द क्लिनिकल ट्रायल्स, तो क्लिनिकल ट्रायल्स में फेज 1, फेज 2, फेज 3, ठीक है। तो फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। तो फेज 1 सबसे पहले हम लोग क्या देते हैं कि वेरी स्मॉल पॉपुलेशन एंड हेल्दी पार्टिसिपेंट्स टू फाइंड आउट द व्हाट इज द सेफ्टी प्रोफाइल ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग। सेकंड में अगर हम बात करें एफिकेसी के लिए, तो हमारे पास 100 पेशेंट्स, लेकिन जब हम थर्ड फेज में जाते हैं तो क्या होता है हमारे पास, द पॉपुलेशन साइज बिकम लार्जर। अब इसी के साथ में अगर हम बात करें कि व्हाट आर द रीजन ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द मैक्सिमम ड्रग, तो सबसे पहला क्या है, एफिकेसी। सेकंड वन, सेफ्टी प्रोफाइल। और अगर हम थर्ड की अगर बात करें तो हमारा जो सबसे बड़ा कारण है सस्पेंशन का ड्रग्स का, दैट इज द कमर्शियल एंड 19% रीजन आर अननोन। तो यानी अगर हमने स्टार्ट किया था 10,000 ड्रग्स से, और 10,000 ड्रग्स से एक सिंगल ड्रग्स पाने के लिए हमको 14 साल की जरूरत है। 14 साल की एवरेज लेंथ, हम टाइम अगर हम बात करें 14 इयर्स, कॉस्ट क्या है, 2.6 बिलियन $US की जरूरत है, और फेल्योर रेट क्या है, 85%। दैट्स व्हाई द मैक्सिमम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री दे शट डाउन देयर ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट यूनिट्स। जितनी भी बड़ी, चाहे जॉनसन एंड जॉनसन हो, चाहे आपके अपने इंडियन अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें, तो किसी के पास ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट यूनिट सब उनके बराबर, उनके पास ना के बराबर रह गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको क्या करना होगा कि मैक्सिमम जो पब्लिक सेक्टर की जितने भी हमारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, दे हैव टू कंसंट्रेट ऑन द ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। इवन अब आप लोग कहोगे सर अभी तक तो आप केवल प्रॉब्लम ही बता रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं है कोई क्या? यस, वी हैव द सॉल्यूशन, लेकिन सॉल्यूशन के लिए वी हैव टू मूव फ्रॉम प्रॉब्लम टू द सॉल्यूशन। तो आप लोग कहोगे कि सॉल्यूशन कहां से आ सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज बाय व्हिच वी कैन गेट द सॉल्यूशन। तो अब सबसे पहले आना चाहिए सॉल्यूशन के लिए, हमें स्ट्रेंथ आनी चाहिए। स्ट्रेंथ कहां से आता है? द फर्स्ट strength came from the nature. Second, strength came from our team. And third strength, it all begins with the microbes. अब आप लोग कहोगे सब कुछ माइक्रोब से शुरू होता है, मैक्सिमम एंटीबायोटिक्स कहां से निकाली गई? माइक्रोब से निकाली गई। जितनी भी एंटीबायोटिक्स है, 90% सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स दे बिलोंग्स टू द माइक्रोब्स। और जितने भी आपके इंडस्ट्री चल रहे हैं, ठीक है, फर्मेंटेशन किससे होता है? ईस्ट क्या है? माइक्रोब्स। जितने भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जितने लोग कर रहे हो, मैक्सिमम एंजाइम्स बिलोंग्स टू द माइक्रोब्स। तो अब अगर बात करें, अब आप लोग कहोगे सब कुछ बदबू आ रहा है, इट इज ड्यू टू द माइक्रोब्स। अच्छी स्मेल आ रही है, इट इज ड्यू टू द माइक्रोब्स। कहते हैं बहुत अच्छी महक आ रही है, वो किसके द्वारा? माइक्रोब्स। और अगर कहीं जा रहे हो, डिकम्पोजिशन हो रहा है, सड़न आ रही है, वो भी किसके द्वारा? तो यहां वहां सारे जहां में तेरा राज है। तो दीज आर द माइक्रोब्स। तो अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, फर्स्ट नेचर, सेकंड टीम एंड थर्ड माइक्रोब्स। तो पॉसिबल सॉल्यूशन स्टार्टेड विद द नेचर। अब फ्लेमिंग साहब ने उस समय क्या कहा था? वन समटाइम्स फाइंड हु इज नॉट लुकिंग फॉर। यानी हम जो चीज पाना चाहते हैं वो नहीं मिलता है, हमें कुछ दूसरा ही मिल जाता है। उस ऐसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? सेरेंडिपिटी। हम लोग क्या बोलते हैं? सेरेंडिपिटी। बिकॉज ही वाज वर्किंग ऑन द स्टेफालोकोकस ऑरियस, और वहीं पर ही उनको मोड्स ग्रो हुआ था, पेनिसिलियम ग्रो हुआ था, एंड उन्होंने एक क्लियर जोन पाया था। तो उसके बेसिस पर ही वाज वर्किंग ऑन द बैक्टीरिया, लेकिन बाय डिफॉल्ट वहां पर एक मोड्स ग्रो हो गया था, और उसी के बेसिस पर उन्होंने एक नोवेल ड्रग अगर बात करें तो वो डिस्कवर किया,
उसको हम लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। और एंटीबायोटिक्स की अगर बात करें तो पूरे मिलियंस लाइफ की सेविंग्स हुई है। चाहे आपकी कॉलरा रही हो, चाहे आपका निमोनिया रहा हो, चाहे आपका डायरिया रहा हो, XYZ जितनी भी चीजें रही हो, मैक्सिमम अगर लाइफ सेविंग हुई है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एंटीबायोटिक्स। एक भाई साहब इस तरह से ड्रग डिस्कवरी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? एर्नाल्ड मोरे साहब की आंख बंद करके, आंखों पर पट्टी बांध करके कहते हैं कि जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इस तरह से ड्रग डिस्कवरी की थी तो हम भी कुछ इस तरह से ड्रग डिस्कवरी करेंगे। कैसे करेंगे? कि आंखों में पट्टी बांध करके ऐसे एक दो चीजें मिलाएंगे तो तीसरी नहीं हमारी डिस्कवर हो जाएगी। लेकिन नहीं, वो टाइम हमारा चला गया। तो उसके लिए हमारे पास क्या है? क्योंकि सबसे पहले व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द ड्रग डिस्कवरी के लिए सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट द डिजीज डिस्कवरी। क्या स्पेसिफिक डिसीजेज है, उसके बेसिस पर फिर हमको क्या करना है? पहले वी हैव टू डिस्कवर द डिसीज। सेकंड वन, मॉलिक्यूल डिस्कवरी। तो ड्रग के लिए सबसे पहले हमें एक नोवेल मॉलिक्यूल की डिस्कवरी करनी पड़ेगी। फिर इसके साथ में हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव मूव टुवर्ड्स द प्री क्लिनिकल टेस्टिंग। जब प्री क्लिनिकल टेस्टिंग करेंगे तो प्री क्लिनिकल टेस्टिंग किसको बोलते हैं? कहां तक? ह्यूमन के पहले जितने भी हमारे स्टेप्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं प्री क्लिनिकल। तो उसमें से हमारे रोडेंट्स जितने भी हो गए, जैसे माइस हो गए, रैट्स हो गए, और अप टू मंकी तक जो भी चीजें करते हैं इसको बोलते हैं प्री क्लिनिकल टेस्टिंग। ठीक है। फिर इसके बाद में फिर हम लोग किस में मूव करते हैं? क्लिनिकल टेस्टिंग। तो उसमें फेज 1, फेज 2, फेज 3 और लास्ट में FDA अप्रूवल। और ईच स्टेप पर अगर हम बात करें, रिपीट करना है। सेकंड स्टेप पर सक्सेस रेट इज वेरी लो। और अगर ये ऐसा है तो ईच एंड एवरी स्टेप पर हमारे पास क्या है? फेल्योर। तो आप लोग कहोगे कि सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका क्या है? वी हैव टू रीपर्पज द ड्रग, रीपोजिशनिंग ऑफ द ड्रग। रीपर्पज कर देते हैं ड्रग, लेकिन रीपर्पज हम लोग कब करेंगे? जब हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, और जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर वेरी लेस, तब देयर इज लेस चांसेस ऑफ द ड्रग रीपर्पजिंग। इवन अगर हम बात करें तो हमारी टीम ने भी मेनी ड्रग्स का जो है रीपर्पजिंग की। तो सबसे पहले अगर आप लोग बात करो कैथेरेंथिन, तो कैथेरेंथिन मॉलिक्यूल से ये किसमें यूज होता है? एंटी कैंसरस ड्रग। तो अगर हम इसका नेटिव अगर वो चीज करें तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर सेल्स। उसको हमने क्या किया? एंटीबायोटिक्स के तौर पर उसको यूज किया। तो रीपर्पजिंग ऑफ द ड्रग सबसे पहले हम लोगों ने किया कैथेरेंथिन में किया, और दूसरा फिर हम लोगों ने किया कुरकुमिन। तो कुरकुमिन की भी अगर हम बात करें तो दे आर मेनली एंटी कैंसरस ड्रग्स। तो एंटी कैंसरस ड्रग्स को फिर हम लोगों ने फिर किसमें यूज किया? ये रीपर्पज किया कि दैट मे बी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन आल्सो। लेकिन वही मेजर प्रॉब्लम है, वी डोंट हैव मेनी आर्सेनल्स इन आवर वार रूम। हमारे पास नई मिसाइलें नहीं है, तो फिर हम पुरानी अगर कितनी जगह आप यूज करोगे? फिर इसके साथ में व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द, अगर आप बात करें ऑफ पेटेंटेड ड्रग की, तो स्टार्ट हुआ था, अगर हम 15 की बात करें तो 60 से स्टार्ट हुआ था ऑफ पेटेंटेड ड्रग्स की जो रिपर्पज्ड हुई थी। और आज के डेट में अगर आप करोगे दैट इज लेस देन 5 और 6। तो इसका मतलब रिपर्पजिंग भी धीरे धीरे दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आप लोग बात करोगे स्मॉल मॉलिक्यूल्स। अब हम आते हैं नेचुरल मॉलिक्यूल्स की तरफ। तो अगर स्मॉल मॉलिक्यूल्स की बात करें तो आप लोगों ने जो है अच्छी तरह से अगर पढ़ा होगा तो केमिकल एंटिटीज, बायोलॉजिक्स, तो जितने भी हमारे केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं दे आर द स्मॉल मॉलिक्यूल। तो अगर आप बात करोगे 1997 से टिल 2021 तक, the dominancy of the new chemical entities in the form of the small molecules, और
बायोलॉजिक्स भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो इसके बेसिस पर हम ये चीज कह सकते हैं कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर द प्रॉमिसिंग मॉलिक्यूल्स दैट मे बी यूज्ड एज न्यू ड्रग्स। अब पॉसिबल सॉल्यूशन अगर हम बात करें, जैसे हम आयुर्वेदा की बात करते हैं, तो आयुर्वेदा की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम प्लांट बेस्ड होते हैं। तो प्लांट बेस्ड की अगर हम बात करें तो प्लांट में भी कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। दीज बिलोंग्स टू द फिनोलिक्स, टर्पिनॉइड, एसेंशियल ऑयल, अल्कलॉइड एंड many other group of the plant molecules like glycosides, tetralone and many more. So these are the different class of the molecules which are already reported for the antibacterial and drug resistance reversal potential. अब आप लोग कहोगे कि इसमें प्लांट मॉलिक्यूल्स में इसका क्या रोल है? कोई इसको इंटरप्रेट कर सकता है? इसमें अर्जुन है आपका एंटीबायोटिक्स, बट अर्जुन डोंट वांट टू फाइट। वही कंडीशन होगी। क्यों? क्योंकि आपका अगर बात करें जो माइक्रोब्स है वो कौरव है और उसमें एक से बढ़कर एक पहलवान थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसा बंदा चाहिए हु कैन रिवर्स द फिनोमिना ऑफ द ड्रग रेजिस्टेंस, व्हिच कैन इनहांस द पोटेंसी ऑफ योरसेल्फ, जिसको बोलते नहीं है, जो आपके दिमाग को चेंज कर दे, जो आपकी पोटेंसी को चेंज कर दे। और ऐसे मॉलिक्यूल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बायो इनहांसर मॉलिक्यूल्स। तो प्लांट मॉलिक्यूल्स आर एक्टिंग लाइक कृष्णा which enhances the potency of the Arjuna. Okay, and there are many mechanisms by which they may enhance the activity of the antibiotic. तो दिस इज द टाइम फॉर टिट फॉर टैट। अब ये टाइम हमारा कैसा आया है? बैक्टीरिया अगर रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है तो हमारी भी ये ड्यूटी है, वी हैव टू फाइट आउट विद रेजिस्टेंस। तो उसमें अगर हम बात करें व्हाट आर द मेजर मैकेनिज्म ऑफ द रेजिस्टेंस, तो सबसे पहले ड्रग ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। ओके, फिर इसके साथ में अगर हम बात करें तो बायोफिल्म, बायोफिल्म इज आल्सो ए मेजर प्रॉब्लम। सेकंड वन इज द transport of the, it means porine proteins are responsible for the transportation of the hydrophilic molecules. तो अब अगर बात करें तो कैसे हम लोग जो है करेंगे कि व्हाट आर द मेजर मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ दीज प्लांट मॉलिक्यूल्स, तो वो कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं व्हिच में रिवर्स द फिनोमिना ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दे में इनहिबिट एट एक्सप्रेशन लेवल। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं? दे स्टार्ट टू इनहिबिट एट द एक्सप्रेशन लेवल। सेकंड वन, दे आर इनहिबिटिंग द इफ्लक्स फ्रॉम ड्रग ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। तो अब वो ड्रग ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स के साथ कैसे इनहिबिट करते हैं? बाय कॉम्पिटिंग विद एंटीबायोटिक्स। दे में ब्लॉक द इफ्लक्स एनर्जी, they may stop functional assembly of the efflux pump. They are also responsible for inhibiting the metallo-beta lactamases. They are also responsible for changing permeability. They are also responsible for inhibiting the biofilms, as well as they are also responsible for the production of the porins molecules. So these are the different molecules, different mechanisms by which the plant molecules are responsible for the drug resistance reversal. सिनर्जी क्या होता है? एक टर्म होता है सिनर्जी, कौन बताएगा? और ड्रग डिस्कवरी के केस में जो है, क्योंकि आप लोग आयुर्वेदा से बिलोंग करते हो और आयुर्वेदा में मैक्सिमम हमारे क्या होते हैं? सभी मिक्सचर होता है। तो आप लोग ही जरा बताओ व्हाट इज सिनर्जी?
हम बोलिए, बताइए। सर, दो ड्रग्स के प्रॉपर्टी मिलके उसके को इनहांस कर देते हैं, उसके प्रॉपर्टीज को दोनों मिलके, अगर दोनों को देखा जाए एक साथ में, अगर वो वर्क कर रहे हैं। कितना? तो 2 टाइम्स? नो सर, मोर देन। यस। ये आवाज कहाँ से आ रही है? अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? सिनर्जी की अगर डेफिनेशन करें, 1 and 1 should not be the 2, it is more than 2, and 1 and 1 should be the 11। उसको हम सिनर्जी बोलते हैं कि जब दो ड्रग को आपस में मिलाएं तो उनकी एक्टिविटी कई टाइम्स बढ़ जाए, उसको हम सिनर्जी बोलते हैं। इसीलिए जब आप लोग स्टैंडर्डाइज एक्सट्रैक्ट की अगर हम बात करते हैं, या फिर हम नए नए जितने भी आप लोग भस्मा की बात करते हो, तो जैसे हम लोग प्यूरिफाइड मॉलिक्यूल्स की तरफ जाते हैं, देयर इज मैक्सिमम चांसेस ऑफ द टॉक्सिसिटी। जितने भी हमारे हैं, जैसे हम प्यूरिफाइड मॉलिक्यूल्स की तरफ बढ़ते जाते हैं, मेजर प्रॉब्लम क्या हो जाता है? टॉक्सिसिटी। लेकिन स्टैंडर्डाइज एक्सट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो उसमें देयर इज लेस चांसेस ऑफ द टॉक्सिसिटी। अब उसमें जो है सबसे बड़ा क्या होता है, जैसे हम लोग एक्सट्रैक्ट अगर हम लेते हैं तो एक्सट्रैक्ट की सबसे बड़ी खूबी क्या होती है? दीज आर द मिक्सचर ऑफ मेनी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और जो मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं तो देयर आर 2 कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूल्स, मेजर मॉलिक्यूल्स एंड माइनर मॉलिक्यूल्स। और ये दोनों क्या होते हैं? दे आर वर्किंग इन ए सिनर्जिस्टिक मैनर। जब वो सिनर्जिस्टिक मैनर में काम करते हैं तभी वो क्या होता है, इसीलिए बोला गया है दो ड्रग हम वही आपस में कॉम्बिनेशन करते हैं। तो मैक्सिमम अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन, अगर थेरेपी की बात करें तो मैक्सिमम अगर होता है ट्यूबरकुलोसिस के केस में हमारा यूज होता है, दूसरा कैंसर के केस में आपका यूज होता है। कौन सी ड्रग्स? व्हिच में वर्क इन द सिनर्जिस्टिक मैनर। 1 and 1 should not be the 2, it should be 11। तो अगर 1 और 1 11 अगर हो तभी वो सिनर्जिस्टिक है, 1 और 1 अगर 2 हुआ तो वो सिनर्जिस्टिक नहीं। जी जी जी। और रेस्ट हो गया। सर इसीलिए बोला गया है कि हम कौन से दो ड्रग को आपस में मिलाएंगे, तो दो ड्रग वही मिल सकती है, दे में एक्ट लाइक ए सिनर्जिस्टिक मॉलिक्यूल। अगर वो सिनर्जिस्टिक वे में काम नहीं कर रहे हैं तो हमें उनको मिलाने की जरूरत नहीं है, और मिलाएंगे तो रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। तो अब आया कि we can use the plant as the antimicrobial agents। Yes, we can use the plant as antimicrobial agents, लेकिन what is the merit of the plants? They belongs to the small molecules। कोई भी अगर plant molecules की बात करेंगे वो बड़े molecules नहीं होते हैं, while in the case of the antibiotics these are the bigger molecules। ठीक है, वो बड़े molecules होते हैं, while in the case of the plant molecules these are the small molecules। तो there is chances कि उनकी खुद की एक्टिविटी कम रहे when compared to the antibiotics। So these are the different group of plant molecules which are already reported as antibacterial agents, and these are the different reference for that particular plant molecule। इसके साथ में क्या हुआ कि these are the different phytomolecules when used in the combination with different group of antibiotics। So these are the different molecules like lysergal, tenoclabine, reserpine, piperine, and gallic acid, and many more। So these are the different molecules which are used with the antibiotics
and these molecules were reported that they are able to enhance the activity of antibiotics many folds. So these are the different plant molecules which are already reported by our team as drug resistance reversal agents or synergistic molecules. So these are the different group of plant molecules that are already reported as drug resistance reversal agents. अब आप लोग कहोगे इसका इम्पैक्ट क्या होगा? अगर हम ड्रग रेजिस्टेंस रिवर्सल भी करा लिए तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो इसका इम्पैक्ट ऐसा होगा कि मान लीजिए वी आर टेकिंग एग्जांपल लाइक टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स. तो अगर टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स की अगर हम ओवरऑल बात करें, दीज आर द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, और एक बार अगर डोज की जरूरत होती है दिन भर में, तो हमें कितने डोज की जरूरत है? 250 mg, और कॉस्ट कितना आता है? $0.3. एक टेबलेट की अगर हम कॉस्ट की बात करें तो ये कितने हमें जो है जरूरत है? ये है हमें $0.3. अगर हम टोटल वर्ल्ड मार्केट की बात करें तो वी नीड 500 मिलियन टैबलेट्स. अब अगर हम बात करें 500 मिलियन टैबलेट्स की हमको जरूरत है, अगर कास्ट की बात करेंगे $150 मिलियन की हमें जरूरत होगी इसके सिंथेसाइज करने के लिए. अब अगर हम एक्टिविटी केवल 4 फोल्ड ही बढ़ा दें एवरेज, लेकिन देयर आर मेनी मॉलिक्यूल्स व्हिच आर रिपोर्टेड they may enhance the activity of antibiotics up to 264 times. अगर हम इतना ज्यादा एक्टिविटी अगर हम बढ़ा दिए 4 times, एवरेज 4 times, तो क्या होगा? डोज रिक्वायरमेंट इज reduced to 125 मिलियन टेबलेट्स. जो 5 मिलियन टेबलेट्स की जरूरत थी, अब कितने? अगर 4 फोल्ड ही एवरेज अगर होता है इनहांसमेंट, तो हम लोग क्या है कि वी नीड ओनली 125 मिलियन टेबलेट्स, और कॉस्ट जो आपका था $150 मिलियन, वो आपका कॉस्ट घट करके कितना हो गया? 37.5 मिलियन. तो अगर ये बात करें कि दोनों टर्म में हमारा कमी हो रहा है, फर्स्ट इन द टर्म ऑफ द डोज एंड इन द टर्म ऑफ द कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, तो दोनों तरफ से ये कम हो रहा है. अब दोनों तरफ से अगर ये कम हो रहा है तो उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि डिले इन द ड्रग रेजिस्टेंस. व्हाट इज द मेजर मैकेनिज्म ऑफ द ड्रग रेजिस्टेंस? ड्यू टू द ओवर यूज ऑफ द एंटीबायोटिक्स. तो अगर हम डोज कम लेंगे तो देयर इज लेस चांसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द ड्रग रेजिस्टेंस. सेकंड क्या हो जाएगा? लीडिंग टू इंक्रीज सेल्फ लाइफ ऑफ द एंटीबायोटिक्स. क्योंकि मैक्सिमम एंटीबायोटिक की जो सेल्फ लाइफ है वो खत्म क्यों होती है? बिकॉज वी आर using too much of the antibiotics. Due to this reason the self life of the antibiotics becoming very less. So we can enhance the self life of the antibiotics. तो हम दो चीजों पर काम कर सकते हैं. कॉस्ट भी घट गई हमारी, हमारा टाइम ड्यूरेशन भी घट गया, और डोज भी घट गया. तो इसके बेसिस पर हम लोग ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट हम लोग कम से कम by using the plant molecules we can enhance the activity of the antibiotics. So we can reduce the dose, we can reuse the drug, and we can recycle the drugs. अब ये सब फॉलो करने के लिए हमें क्या जो है जरूरत है? We need the right drug, right dose and right duration. तो आप लोगों में से मैक्सिमम लोग तो डॉक्टर्स होते हैं. अपने यहाँ किसी भी जो है आप फार्मेसी पर चले जाइए और बस उससे बोल दीजिए कि हमें जो है सर्दी है, बस वो आपको जो है जितनी तरह की एंटीबायोटिक सब दे देता है. तो वो कौन बताएगा which is the right drug, which is the right dose and what is the right duration? वो हमेशा आपका फिजिशियन बताएगा. तो इन द एब्सेंस ऑफ द फिजिशियन यू आर नॉट सपोज टू टेक द एंटीबायोटिक्स. अब ये एटलीस्ट आप लोग कर सकते हो कि वी कैन फॉलो द right drug, right dose and right duration, because these antimicrobials needs handled with care, because these are the GEMS. जैसे आपके घर में जो सोना रहता है कितनी अच्छी तरह से आप लोग रखते हो, उसी तरह से this is the time to preserve our antimicrobials,
because these are the germs like antibiotics, antiviral, antifungals and antiparasitics. अगर हम ये सब भी कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हम लोग अवेयरनेस तो कर सकते हैं कि हम जाएंगे और डायरेक्टली जो है एंटीबायोटिक नहीं ले लेंगे। ठीक है, अब आप लोगों के जो है क्वेश्चंस के लिए हम लोग कहते हैं वी आर जस्ट 10% ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब आप लोग कह रहे होगे कि हम लोग 10% ही ह्यूमन बीइंग क्यों हैं? बिकॉज द 90% अगर हम ह्यूमन सेल्स की बात करें अपने आप में तो 10⁻13 and when we are talking about the microbial cells, bacterial cells, these are the 10⁻15। तो इसका मतलब क्या हुआ? we are only 100 times हमारे ज्यादा क्या होते हैं? माइक्रोब्स होते हैं। हमारा जितना भी बॉडी वेट होता है वेट के अनुसार 2 to 5% माइक्रोब्स होते हैं, लेकिन नंबर्स की अगर बात करें दे आर 10 to 100 टाइम्स मोर व्हेन कंपेयर टू द ह्यूमन सेल्स। तो हम लोग ह्यूमन हुए नहीं कि ह्यूमन माइक्रोब हाइब्रिड्स हुए। क्या हुए? हाइब्रिड हुए। अब हाइब्रिड हुए तो आप एक चीज जरा बताओ कि वी लव माइक्रोब्स, वी हेट माइक्रोब्स बट वी नेवर इग्नोर द माइक्रोब्स। ठीक है, मूड भी हमारा कौन डिसाइड करता है? माइक्रोब्स। गट माइक्रोबायोटा जैसे डिस्टर्ब होता है वैसे हमारा मूड खराब होना शुरू होता है। तो अल्टीमेटली वी आर द ह्यूमन माइक्रोब्स हाइब्रिड। ठीक है, और अगर आप ये सोचते हो इफ यू डोंट लाइक द माइक्रोब्स यू आर ऑन द रॉन्ग प्लेनेट। ठीक है, so I am very thankful to all my team and all my team members by the hard work of all my team members we are able to publish more than 70 publications in the field of the antimicrobials. So I would like to end with coming together is beginning. Coming together is beginning. Keeping together is progress. But working together is success. तो सभी को सक्सेस होना है, और अगर आप लोगों ने किसी ने एक अच्छी सी ड्रग बना दी तो वो शायद हम लोगों के लिए सबसे बड़ा जेम होगा। तो इसी होप के साथ थैंक यू वेरी मच। So I am thankful to Param Puj Maharaj ji, Yogi Adityanath ji Maharaj, Major General Atul Bajpayee, Honorable Vice Chancellor MAHAYOGI Gorakhnath University, Dr. Pradeep Rao, Registrar, Dr. A.K. Singh, Honorable Vice Chancellor MAHAYOGI Guru Gorakshnath ICMR-RMRC University, Dr. Arvind Kushwaha, Sir, Principal Sri Gorakshnath Medical College, Sri Giridhar Sir for inviting me and all the team of HITAYU. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you so much, Dr. Gaurav, sir. And I'm very sure that this session is going to so much useful for every one of us. And now this session is open for question answer session. If anyone have asked to anything, please proceed. Okay, now I would like to request Dr. Arvind Kushwaha, sir. Please brief the session. I think we must all applaud a very, very technical yet enlightening talk by Dr. Gaurav and his immense work in the field of microbes, which includes viruses and bacteria both, which always keep troubling us. And I think the importance of research in medicine is something which cannot be really overemphasized. We all need it. And as he's rightly pointed out, the antimicrobial resistance is a real problem because the drugs that we have, that is the antibiotics, are limited, number one. Secondly, there are no new discoveries which have happened for last few decades. Antivirals are very difficult to make, we all know it. And even those which have been made are encountering resistance. So it is a very, very
difficult and yet very, very important topic that Dr. Gaurav has dealt with. I thank Dr. Gaurav for actually introducing us to these nuances of microbes and their role in disease and our effort to overcome those diseases. Thank you, Dr. Gaurav, for all your work and lovely talk that we had. Thank you. Thank you so much, sir. Now I would like to request our director, sir, Dr. Rajesh Bahal, sir, and our principal, sir, Dr. Girdhar, sir. Please facilitate our resource person, Dr. Gaurav, sir. Now I would like to Dr. Girdhar, sir, to present certificate. Our chairperson, Dr. Arvind Kushwaha, sir. Now I would like to invite Girdhar, sir, to present a certificate and memento to our co-chairperson, Dr. Sumit, sir. I would like to request Dr. Girdhar, sir, please provide a certificate to our rapporteur, Siddhant Chaturvedi. Sir, please provide a certificate to me. Thank you, sir. Thank you so much, everyone, for this patientful listening. And now I would like to hand over my responsibility to Dr. Sadhvi Nandan, sir, to Om Sahasracham Garadhesham Sagurun Cha Saraswatim Janakam Janitrim Cha Shastra Adam Pradamamyam Ratnakarado Himalaya Kiritinim
ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम्। अस्मिन् अस्य सत्रस्य अन्तिमसत्रस्य सत्रे सर्वेषां स्वागतम् अभिनन्दनं च अहं करोमि। अहं साधुनन्दन पाण्डेयः, आचार्यः, संस्कृत संहितासिद्धान्त संस्कृत विभागे पुनः प्रकाशमपि आगतवान्। अतः सर्वेषां पुनः अभिनन्दनं स्वागतं च करोमि। धन्यवादः। अस्मिन् सत्रस्य विषयः अस्ति लाइफ स्टाइल एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज इत्युक्ते जीवनशैली हृदयरोग च इति विषये स्वविषयं शोध प्रकटितुम् अहं डॉक्टर गोपिकृष्ण आयुर्वेद कॉलेज गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पक्षतः सादरं निवेदयामि। महोदयः अस्मिन् सत्रस्य विशिष्ट वक्तारः अस्ति। सर्वे करतालध्वन्या स्वागतम् अभिनन्दनं च कुर्वन्तु। कृपया महोदयः स्वः स्थानं स्वीकरोतु। अस्य सत्रस्य सत्राध्यक्षः डॉक्टर राजेश बहल महोदयः विजयनाथ चिकित्सालयस्य निर्देशकः रूपे कार्यं कुर्वन् अस्ति। महोदयस्यापि करतालध्वन्या स्वागतम् अभिनन्दनं च कुर्वन्तु। पुनः अस्य सत्रस्य सहाध्यक्षः डॉक्टर परीक्षित देवनाथ महोदयः एसोसिएट प्रोफेसर गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आयुर्वेद कॉलेज मध्ये स्वदायित्वं निर्वहति। महोदयस्यापि करतालध्वन्या स्वागतम् अभिनन्दनं च कुर्वन्तु। अस्मिन् सत्रे टिप्पणी स्वीकर्तारः डॉक्टर शिवानंद तिवारी महोदयाः अपि स्वागतम् अभिनन्दनं च कुर्वन्तु। पुनः सर्वेषां स्वागतं करोमि अहं। तदनन्तरम् अहं डॉक्टर परीक्षित देवनाथ महोदयं निवेदयामि। कृपया विशिष्ट वक्ता रूपेण मंचे आगतः डॉक्टर गोपिकृष्ण महोदयस्य परिचयं ददातु इति एवं च अभिनन्दनं च कुर्वन्तु। Very good afternoon to you all. Today we are gathered for our HITAYU seminar. Very good afternoon to all. So today we are gathered for the HITAYU seminar, and today's our eminent speaker is Dr. Gopikrishna Acharya. At present, he is professor and HOD of Department of Nidana and Vikriti Vigyan at Gorakshnath Institute of Medical Sciences, MAHAYOGI Goraknath University, Gorakhpur. So when I introduce my sir, he is also alumni and even been our teacher at SGM Hasan. Sir completed his UG in 2002 from RUHS University, and he was from the first batch. He completed his PG from Government Ayurveda College, Kannur in 2006 under Kannur University, and completed PhD in 2020 from RGUHS. He has a teaching experience of more than 18 years, and as a teacher, he has achieved many awards. Among them, during his stay in SDM group of institutions, he has been awarded many times as the best teacher. Another facet of sir is he is a writer. He has published many articles, more than 40, around like that, and also author of 2 books, Nidana Prakasha and Atanka Prakasha. So he's an eminent person in the field of Ayurveda, and
I invite sir to deliver his speech. Sir, please. Am I audible? Mukam karoti vachalam, pangum langhayate girim, yatkrupatamaham vande, paramananda madhavam. Vagarthaviva sampraktau, vagartha pratipattaye, jagatah pitaro vande, Parvati Parameshwarau. At present, I am giving my sincere gratitude to the organizers as well as the management who have given me the opportunity to speak about the topic which is very near to me. Whenever if you speak about the cardiac diseases as such, alarming change was being noticed. When I was in my primary school education, it was being said that, so usually I am hearing in the newspapers, the person who is crossing the age of 50 or 55, they were having the death due to cardiac disease, specifically from myocardial infarction. When I entered my BAMS education, at that particular time, it is being said that I am hearing in the newspapers, so person crossing the age of more than 40, they were dying because of cardiac diseases, that too myocardial infarction. When I entered into the post graduation, it was being said that the in the newspapers I am hearing that the person crossing the age of 25 plus, they were dying because of myocardial infarction. So recently 3 or 4 months back, I heard the one of the news that caught my attention. The age who is yet to complete his high school education, that is around 13 years of age, that particular boy died because of myocardial infarction. See the level of the diagnosis of specifically cardiac disease, myocardial infarction. In the earlier days, it was considered to be an age disease of old age. Now, young age itself, the person is having the disease as such. See the change as such, and what might be the change in the lifestyle you have to think of. For that particular reason, I am going to have a brief outlook regarding the Hridroga in terms of the Ayurveda perspective as well as the Western perspective. I'd like to give you the brief outlook. Whenever if you are going for the understanding of any of the concept as such, you have to have a solid understanding of physics, chemistry and biology, and if you are learning those informations along with the Ayurveda fundamentals, then any of the information mentioned in Ayurveda, they can be learned with deepest understanding. And another thing as such, whenever if you are going into the learning, it is being mentioned that you have to have a thorough knowledge of Kriya Sharira. If you are knowing the Kriya Sharira well, then learning Roga Nidana is easy. If you are knowing the Roga Nidana well, then learning Kaya Chikitsa is easy. In other words, physiology, extended physiology is pathology, and restoring the altered pathology or altered physiology
is termed as the clinical medicine, or what we can say the Kaya Chikitsa. So that means you have to have a thorough knowledge of Kriya Shariri in your first year and thorough knowledge of Roga Nidana in your second year. Then you can have a thorough knowledge of, if you are having this, then thorough knowledge of your Kaya Chikitsa. If you are doing that, then you can become a successful clinician. So today's the topic as such, that is mainly related with the splitting the concept of Ayurveda, simplifying the concept of Ayurveda, and what might be the current understanding of that, and how to have a link between Ayurveda and Western information, that will be dealt today. So this particular image, see this particular image, whenever if you are having this, this shows about the concept of astronomical vision. When you say about astronomical vision, most of you are hearing, what is this, a new term. So if you want to have the better understanding of any concept as such, or in your family should have a bigger vision than your family, right? If you want to have the recognition in your locality, you should have a bigger vision than your locality. That means in your village itself. If you want to have a bigger vision in your district proper, you have to have a bigger vision of your state itself. If you want to have a bigger vision or the recognition in your state, you should have a vision of the nation. If you want to have a bigger name in your nation, you would have a bigger vision of the world. If you want to have a recognition in the world, you have to have a bigger vision than the world. That is what is being termed as astronomical vision. In the same way, if you are able to, this is the, if you are knowing this as such, how we are going to apply this here? If you want to have the overall understanding of the human being, the diseases as such, you have to have a holistic approach of the person itself. That means in what way the person, these different systems, nearly 9 to 11 systems are working coherently to maintain the health as such. You have to have the overall understanding how this is responsible for the maintenance of the health has to be analyzed. So here there are three images. The first image is showing the engorged veins in the right side of the neck. That is being termed as, can you see this one? That is termed as the visible jugular venous pulsation. When the presence of this jugular venous pulsations on the right side, that is indicative of a right-sided heart failure, specifically right atrial failure itself. When you see the second one, this one, this is indicative of a central cyanosis. Central cyanosis in the sense the person is having the major respiratory or cardiovascular dysfunction, respiratory or cardiac dysfunction. The third image, that is being said that the pitting type of edema, that two bilateral one, which is indicative of the backflow of the blood in the inferior vena cava, that is being termed as the bilateral pedal edema, right sided heart failure. So as far as the Hritaya is concerned, it is having three main words, Hri, Da and Ya. Hri refers to sending, sorry, receiving, and Da refers to sending, and Ya refers to the continuous or repeated cycle of receiving and sending. In that particular sense, so this can be applied to the each and every chamber itself. In the sense, atria, receiving the blood from the right atria, receiving the blood from the superior and inferior vena cava.
but it is sending the blood to right ventricle. Similarly, right ventricle receives the blood from right atrium, sends the blood to pulmonary trunk. When you think about the left atrium, receives the blood from the pulmonary veins, but it is sending the blood to left ventricle. Left ventricle receives the blood from the left atrium, sends the blood to aorta. In the sense, when the person is having the hridroga, there may be a possibility of a disturbance in the receiving the blood, either in the 1, 2, 3 or all 4 chambers, or there may be a possibility of disturbances in the sending the blood, that is in the either 1, 2, 3 or all 4 chambers, and the third one, that is the total disequilibrium in receiving the blood as well as sending the blood. This is overall considered to be the disturbance, or you say that the hridroga refers to, and it is being mentioned that most of you are knowing pranavahanam srota hridayam moolam mahasrotascha, rasavahanam srotasam hridayam moolam dashacha dhamanyah. In that particular sense, if the person is suffering from hridroga, there may be a possibility of affliction of either pranavaha srotas or rasavaha srotas sooner or later. So that is the reason, that is the hridaya is actually the srotomoola of these two srotases. When you think about the overall the blood distribution, so here I am coming to a different what do you say, that the topic itself. See this, we are knowing that the whole human body or the cardiovascular system is having 100% of the blood. When you think about the whole cardiovascular system, all these 100% of the blood is not distributed in all the cardiovascular system, what do you say, that in a proportionate manner itself, that will be distributed in a disproportionate manner. For example, 64% of the blood that is being present, 64% of the blood is present in the veins, whereas 7% of the blood is present in heart itself, 9% of the blood is present in pulmonary circulation, 13% of the blood is present in the arteries, and 7% of the blood is present in the capillaries. So that means if you consider the whole cardiovascular system, 100% of the blood is not present in the different body systems, what you say, that the arteries etc. in a proportionate manner. So that means if any kind of the dysfunction is being observed, that may be responsible for the disturbed cardiac function sooner or later. And regarding the other aspect, whole this particular kind of the abnormal proportion is possible because of the number of capillaries present in the human body. It is consisting of 10 billion capillaries, or otherwise 100 crores of capillaries are present in the human body, whereas the movement of the blood is happening in the capillaries up to 0.3 millimeter per second. 0.3 millimeter per second will be the speed of the movement of the blood in the capillaries. And third thing, it is very important, when you think about the heart, it is the pumping of the blood will be there for every 60 to 100 beats per minute. On an average, 70 to 80 beats per minute will be the movement of the blood in the aorta, but the capillaries, in the capillaries the movement of the blood will be there up to once or twice only, not more than that. That is the reason, if any kind of the dysfunction is happening, there may be a possibility of a affliction of the tissues may happen.
Hridroga, it is being mentioned that kurvanti hridaye badam hridrogam tam prachakshate. That means if the person is suffering from any kind of the dysfunction in the hridaya pradesha, that is being termed as hridroga. In the sense, there may be a possibility of abnormal Vyanavata function. There may be a possibility of abnormal Sadhaka Pitta function. There may be a possibility of abnormal Avalambaka Kapha function. There may be a possibility of abnormal Manas function. There may be a possibility of abnormal Ojas function. In the sense, if the person is suffering from Hridroga, these are the different attributes of abnormal functioning of the components. So that means in total there may be a possibility of disturbances in the myocardium. There may be a possibility of disturbance in the functioning of valves. There may be a possibility of disturbances in the conduction system, that is sinoatrial node, etc. There may be a possibility of disturbance in the coronary circulation. There may be a possibility of disturbances in the autonomic nervous system, that is both may be the sympathetic or parasympathetic nervous function. So all that may lead to, this may be disturbed in cases of Hridroga. So this is the physiology as well as pathology. So when you think about it, suppose if this is considered to be the whole heart, schematic representation of heart, so the above one is suggesting the normal functioning, whereas the below arrow is suggestive of abnormal functioning, in the sense the movement of the blood will be happening physiologically from the superior vena cava and inferior vena cava to right atrium to right ventricle, through the pulmonary artery to lungs, then to pulmonary veins to left atrium, left ventricle, then to aorta. This is the normal phenomenon. Because of the dysfunctioning in the aorta or because of the dysfunctioning in the aortic valve, what actually happens is this may be responsible for the two types of the dysfunction. One, that is there may be a possibility of a backflow of the blood, that is excess amount of the blood will be moving in the reverse direction, plus there may be a possibility of a reduced movement to the forward. In the sense, the backflow of the blood from the aorta, that may be responsible for the accumulation of the blood to happen in the left ventricle. Later there may be a possibility of accumulation of the blood in the left atrium, which is resulting in the backflow of the blood from the pulmonary veins to lungs, which is responsible for the increased venous pressure. Because of that, the lungs that is going to have congestion, what we can say, that is accumulation of the blood in the the pulmonary capillaries, that is termed as pulmonary congestion, which is in turn responsible for the tough tubing, sputum, etc. Further, that is leading to the backflow of the blood to the pulmonary artery. Later there may be a possibility of backflow of the blood to the right ventricle. Later there will be backflow of the blood to the right atrium. Then there will be the backflow of the blood to the the superior vena cava and inferior vena cava. In this way, the person will be having the the disturbances will be noticed in the backwards. Whereas as far as the forward as such, because of the reduced blood supply to the proximal organs, two major organs, they are going to have the dysfunction. One, that is the cerebrum, that is receiving minimum blood supply because of poor cerebral circulation, that is carotid circulation. Second thing, there will be the poor blood supply to the kidneys, which is resulting in the reduced formation of urine, oliguria as well as nocturia. Nocturia refers to the increased movement, increased urine formation in the night time,
but daytime the person will be having the oliguria. These are the overall pathological aspects that will be observed in cases of a person suffering from Hridroga. As far as Nidana of the Hridroga is concerned, Vyayama Tikshnoshati Vireka Vasti Chinta Bhayatra Sagadati Charaha Chardhyama Sandharana Kartrani Hridroga Karshanani Hridroga Kartrani Tatha Vigata. So these are the Nidana that is being mentioned in Charaka Samhita. So if the person is indulging in repeated activities of these, naturally it is considered to be overall disturbances in one's lifestyle, thereby the person may develop the Hridroga. So now I am going to discuss the each and every Nidana, dissect each and every Nidana in how this may be responsible for the total disturbed functioning. Let me discuss now. Regarding the Vyayama, whenever a person is doing the excessive Vyayama, that is being termed as increase of Chalaguna is going to take place. What do you mean by increase of Chalaguna? Most of us will say increased heart rate or increased pulse rate, etc. But if you look into even a deeper aspect, first and foremost thing, there will be carbohydrate depletion. That is where there will be glucose depletion will be there in a matter of half an hour as such. If the person is not taking any of the food substances, that switches to fat metabolism. When there is fat metabolism, that means there will be the stored fat which is present in the subcutaneous tissue of abdomen, buttocks, breast, cheek, etc. that is going to get into the circulation. That means stored fat will be converted into circulating fat, which is nothing but a different form of the Chalaguna, which in turn results in the increase of Laguguna in the body. So when this is happening, that is mobilization is going to take place from the different adipose tissues, resulting in the circulation as such. So this is one of the main risk factor for the development of cardiac disease. How? Let us discuss in the coming slides. As far as the Tikshna Aushadha is concerned, what is the word meaning of Tikshna Aushadha? In the olden days, the most of the medications were given orally. That means if a person is taking more amount of the Tikshna Aushadha, the first and foremost organ affliction was happening in the alimentary canal. That too, that is happening in the stomach itself. So that means there will be inflammation to take place in the stomach. So this is what we can say the normal stomach, but in case of the cardiac, see the redness is going to take place. So that means which may be responsible for the increased movement of the fluid from the capillaries into the gastric lumen. If the person is continuously consuming Tikshna Aushadha, definitely, so this is responsible for the decrease in the, what do you say, that the volume, that is what we can say, the hypovolemia may take place in due course of time. Of course, in a single day or two, this may not happen. This may happen if the person is continuously consuming these medications frequently. So this is what actually happening in cases of the person which is continuously consuming Tikshna Aushadha. So initially this may be responsible for the hypovolemia. Hypovolemia, this is responsible for the decreased venous return from the inferior vena cava and superior vena cava. There will be decreased venous return, which is in turn responsible for the decreased cardiac output, which in turn responsible for the hypotension, which in turn responsible for the tissue hypoxia, which in turn responsible for the
what do you say, that organ dysfunction that may lead to multi-organ failure. In this way, the person may develop, what do you say, that the cardiovascular dysfunctioning can happen. Of course, as we have discussed, this is the area, that is the where there may be a possibility of Tikshnaushadha effect. Not these, this is not the, these are the not two organs. This is the organ where the person may have the Tikshnaushadha effect, inflammation in the alimentary canal, which is leading to the movement of the fluid either in the stomach or small intestine or large intestine. Thereby there will be a possibility of a hypovolemia that may take place. That's how the Tikshnaushadha effect will be leading to the cardiovascular dysfunctioning in due course of time. Virechana. When you think about Virechana, the first and foremost thing that is going to happen is inflammation that will be happening in the small intestine. So if the person is consuming the Vamanaushadha, inflammation is going to happen in the stomach. Virechana, there will be a possible inflammation to happen in the small intestine. Again, the mechanism will be similar. That is, the transfer of the fluid that will be happening from the capillaries of the which are supplying to the small intestine. The more and more fluid will be entering into the small intestinal lumen. Thereby, the person may develop hypovolemia later. In case of Basti, mechanism is happening in the large intestine. The inflammation to happen in the large intestine, thereby increased movement of the fluid will be taking place from the capillaries of the large intestine into the large intestine. Thereby the person may develop hypovolemia later. Chinta. When you think about the most commonest description, if you learn your Samskrita, it is being mentioned, Chintayascha chitayascha bindu matram vishishyate chita dahati nirjivam chinta dahati jivinam. This is the main description. Chinta as such, that is leading to excessive mental stress. When there is excessive mental stress, the outcome will be that is responsible for the autonomic nervous system activation. Immediately there will be sympathetic nerve stimulation that will be coming into action. When there is sympathetic nerve stimulation, which is leading to increased heart rate and hypertension, that is going to take place. When you think about the Bhaya and Trasa, they are two different terminologies. Bhaya means self-induced, Trasa means some other person inducing fear in one person. So when you think about this particular action, this may be responsible for the again sympathetic nerve stimulation, which in turn results in again palpitation and tachycardia, etc. that is going to take place. As far as Gadatichara, Gadatichara refers to the abnormal treatment itself. When you say about the Gadatichara, that means any disease that is afflicting either Pranavaha Srotas or Rasavaha Srotas. When this is happening and if no proper treatment is being given, then the involvement of Srotomula, as we have discussed here at the beginning, that is the Pranavaha Srotas as well as Rasavaha Srotas, Srotomula is considered to be Hridaya. In sooner or later, if the person is suffering from either Pranavaha Srotas Vikara or Rasavaha Srotas Vikara, there may be a possibility of affliction of Hridaya sooner or later.
Chardi. When you think about Chardi, it is even mentioned that aspiration pneumonia is one of the possible sequel. That is considered to be Mallory based here. Amasandharana, that is considered to be the presence of macromolecules in the alimentary canal. Because of that, there will be a possibility of, what do you say, that the movement of this macromolecules that will be happening in the intravascular compartment. From there, it will be moving into the interstitial compartment. From there, it will be moving into the intracellular compartment. Now, question arises: why this macromolecules, they are moving into the coronary circulation itself? The reason is, whenever the macromolecules are entering into the aorta, what actually happens is the lighter molecule they move first, but heavier molecules they are moving slower. When this is happening, naturally when the left ventricle is getting relaxed, what actually happens is there will be movement will be happening in the reverse direction. So that means whenever there is reverse direction, naturally these macromolecules they are going to settle down at this particular region itself. So that means because of a aortic valve presence, and in that particular aortic valve itself there is considered to be the, what do you say, that coronary artery openings are there. Because of that particular reason, the macromolecules that is being mentioned, which are coming into the circulation through the, what do you say, that the alimentary canal, plus the circulating fat which is mobilized from the different tissues responsible for the manifestation of a coronary artery diseases. As far as Lakshana is concerned, वैवर्ण्य मूर्छा ज्वरका सैक्का श्वासस्य वैरस्य तृषा प्रमोहाः छर्दिः कफोत्कलेश रुजोरुचिश्च हृद्रोगजाः स्युः विविधास्तथान्ये. So there are multiple understandings, but due to the lack of time, I am not discussing about these different aspects. Only I am going to discuss about the further subtypes. Any vasospasm happening in the heart because of the exposure to the cold environment, etc., the person may have vataja hridroga symptoms, and any infection related symptoms, the person may have pitta dominant symptoms, and any dysmetabolism related to the fat, that is leading to kaphaja hridroga symptom, and the one which is considered to be who is consuming frequent tilakshira gudashina, etc., that is considered to be, there was the one particular study where increased bacterial growth was being seen, that is around 9,250 per gram of fungal load that is being observed in case of fresh jaggery. So that means if the person is consuming these aspects, naturally there may be a possibility of affliction of the, what do you say, that the fungal infection that may take place. There may be a possibility of
Krimija Hridroga Lakshana itself. Whereas the one that is considered to be microbioma in the milk, that is being considered to be Brucella, Pseudomonas and Mycobacterium tuberculosis, they were the organisms they were being seen there. Take home messages: Hridroga is a discomfort that is going to happen in the chest region, affliction of prana vyanavata, sadhaka pitta, avalambaka kapha, manas and ojas that may be afflicted there, repeated vyayama etc., which will be having more burden on the hridaya pradesha leading to Hridroga, and Vaivarnya, Murcha etc. They were the Lakshana they were being observed in Hridroga. These are the Vataja, Pittaja, Kafaja as well as Krimija Hridroga Lakshana. Any queries? Most welcome. Thank you for patient hearing. धन्यवाद महोदय। किमपि प्रश्नं वा यदि अस्ति तर्हि पृच्छतु। प्रश्नं नास्ति। जी धन्यवाद महोदय। महोदयस्य सम्मानं दातुम् अहं स्मृतिचिह्नेन सम्मानं दातुम् अहं डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी वर्याः महोदयः दयानंद आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज शिवान मध्ये आचार्यः योगाचार्यः अस्ति। डॉक्टर नवीन सीमंतम महोदय प्राचार्यः गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज महोदयं सादरं निवेदयामि, कृपया आगत्य स्मृतिचिह्नेन सम्मानं प्रददातु। Big round of applause for Dr. Gopikrishna for an excellent talk. डॉक्टर गोपिकृष्ण महोदयं स्मृतिचिह्नेन सम्मानं प्रददातु इति निवेदनम्। एवं च सत्राध्यक्षः अस्माकं मध्ये उपस्थिताः डॉक्टर राजेश बहल महोदयः निर्देशकः दुर्गा चिकित्सालय महोदयं सादरं निवेदयामि, कृपया डॉक्टर परीक्षित देवनाथ महोदयं सम्मानं प्रददातु। जी प्रचार महोदयं निवेदयामि, कृपया डॉक्टर राजेश बहल महोदयं स्मृतिचिह्नेन सम्मानं प्रददातु। पुनः डॉक्टर गोपीकृष्ण महोदयं डॉक्टर कृष्ण महोदयं निवेदयामि, अस्माकं सत्र अध्यक्षः डॉक्टर परीक्षित देवनाथ महोदयं सम्मानं प्रमाणपत्रेण स्मृतिचिह्नेन करोतु इति निवेदनम्। जी डॉक्टर परीक्षित देवनाथ महोदयं सम्मानाय कृतज्ञतया स्वागतम् अभिनन्दनं च कुर्वन्तु। अस्य सत्रस्य टिप्पणी स्वीकर्तारः डॉक्टर समरन तिवारी महोदय, कृपया प्रमाणपत्रेण सम्मानं प्रददातु इति निवेदनम्।
all the faculty members present here, and all the students. I just want to convey my sincere thanks once again to Dr. Gopikrishna. It was an excellent talk. We wish we could have seen the entire presentation. I was too engrossed in watching this. It was accompanied with all the shlokas and all, and highly impressive. So this cardiac problem is coming in a big way in our country. So you all please pay attention. And I want you all to take care of the signs, symptoms. Sometimes you catch up early with your clinical acumen. Whatever sir has explained, just whatever is being taught also, bring it into the practice and try and make the patient alert. Ki as to early detection, prevention, that is the best. Lifestyle, yes, lifestyle is very, very relevant, and we have taken it up, HITAYU, and that is the sole purpose of it. So thank you very much. Thank you. There is an announcement now. So we have a tea break now. Actually, tea break was half an hour. We are cut shorting it for 15 minutes. We will be back by 4:28 again here for an important session by an oncologist, Ayurvedic oncologist.